Hello friends, Namaskar dosto. Very warm welcome to our edition with Sunday analysis with SD, where we look at global macro, global market, opportunities and traps. So ये वीडियो जो है this I regularly post. I hope this will help you to how you decide on the allocation of funds. और जहां से हम लोग start करते हैं that is data. Data points हम लोग start करते हैं. कई सारे data थे last week. So this week, जो last week का जो most important data था, that was the core inflation data from US, which significantly altered market का course. बहुत सारे changes हो गए after this data. Core inflation data was much higher than expected. 3.8% था data, 3.7 consensus था, and that is definitely important. Fed wants that rate at 2%. So still almost at the double level of Fed का जो target rate है, जो Fed targets the headline, but core inflation उनका एक concern रहता है. So overall inflation rate was higher 3.2 and month on month core inflation rate was also higher. So all in all देखा जाए this was a much hawkish inflation report. जो hawkish मतलब central banks would remain higher rates के तरफ more biased रहेंगे. और वो रहेंगे कि नहीं वो हम लोग को पता चल जाएगा ये आने वाले वीक मतलब दिस कमिंग वीक में जिसमें what we are about to see on 20th सबसे important data आ रहा है. Before that there are some data important from China. This will fuel growth to China का comeback story. क्या China is coming back after जो policy changes लिए गए, that will be a focus. What is the status of inflation in Europe? That will influence euro exchange rate, but mainly the market will be waiting for this too. This event is significant for Japan, the Japanese yen, Bank of Japan interest rate decision. If they give any hint of rate hike or possibility of rate hike, the Japanese yen can defy other trends, other theme, and can go up significantly. So Japanese yen significant risk arises on Tuesday. Same for Australia, Reserve Bank of Australia interest rate decision. Some data are as zoo sentiment indicators. These are important for overall Germany, but ये हफ्ते में नहीं. If इस हफ्ते market का main focus रहेगा, this is the inflation rate of GBP. This is important, but main focus जो market का रहेगा on this data. This is FOMC Federal Reserve interest rate decision. इस दिन मैं 2 दिन का live session hold करता हूँ for CCMT और master class के जो students हैं. आप इलान मार्केट्स के वेबसाइट में जा सकते हैं. यू कैन गो टू इलान मार्केट्स वेबसाइट. वहां पे आप अगर मेरे नाम टाइप करेंगे AA देते ही आ जाएगा शानुंदु दास और SD. वहां पे यू विल गेट द मास्टर क्लास. सो उन लोगों के लिए आई होल्ड अ 2 day सेशन. कभी कभी द रेनबो स्टूडेंट्स ऑल्सो ज्वाइन इन एंड दिस for first course is the part of the multi-asset trading mentorship program, which is an awesome program offered by the e-learn markets. तो लेट्स कम बैक कि हम लोग जहां पे थे. दिस इज द FOMC इंटरेस्ट रेट डिसीजन. दिस इज द मेन इवेंट, मेगा इवेंट. हम लोग जो सेल ऑफ का स्टार्ट देख रहे हैं निफ्टी में, ये एक्सरबेट हो सकता है, फर्दर सेलिंग आ सकता है, और इट कैन कंप्लीटली रिवर्स द कोर्स एंड वी कैन सी अ फ्रेश बाइंग अगर फेडरल रिजर्व डोविश रहा. So overall projection ki current Federal Reserve ka interest rate is quite high. Let's go to the Fed website to directly check the probabilities. So CME Fed Watch tool mein currently the current meeting that is coming in 20th March, and 98% probability the rates will remain at the current level 5.25 to 5.50. Whereas now if we look at the first year, matlab this year projection jaise 2024 Fed said there will be 2 rate cut. So market is still projecting somewhere around little more than 2 rate cuts. 2 rate cut is 50 basis points, and market is pricing a little higher than 2 rate cuts.
सो क्या होता है ये प्रोबेबिलिटी में आफ्टर द फेडरल रिजर्व, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉच। हम लोग ईएन मैक्रो माइक्रो के वेबसाइट में जाके सेंट्रल बैंक में फेडरल रिजर्व एंड वी कैन चेक आउट करंटली मार्केट इज प्राइसिंग a rate cut of 3 rate cuts 75 basis points and first rate cut चालू होने का expectation is from June. At the beginning of the year it was expected to start at this meeting March, but Federal Reserve ने अपना tone change कर दिया and market has also changed. अगर आप उनके साथ change नहीं किए अपना asset allocation, I'm sure your portfolio is in red. सो दिस इज द फेडरल रिजर्व के, इसके साथ साथ बेसिकली मेन मैक्रो का 3 थीम को मैं नजर कर रहा हूं। वन इज द सेंट्रल बैंक शॉक, द इंटरेस्ट रेट शॉक। इंटरेस्ट रेट शॉक क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हैज ब्रोकन अ ट्रेंड। लेट मी हाइड माय सेटअप। The long term interest rate has broken a trend, long term trend, so this can be a major shock. This is one area I'm looking at. I'm also looking at China weakness. China weakness के लिए I'm looking at these two index. First of all, maritime shipping एक बहुत important indicator है to get pre-signals or the health of the global economy. So this index went up because there was geopolitical tension in a very important shipping channel. But after reaching a certain point, it is coming down. So I ask myself, और आप लोगों को पूछिए, क्या geopolitical tension खत्म हो गया? Is it now back to normal? Is everything fine? So for that, is everything fine? मैं जो डेटा को देख रहा हूं, that is the Suez Canal, बहुत ही important shipping channel है जहां पे ये trouble हो रहा था. So there is no major recovery. The volume that was getting transported via shipping channel has now significantly come down, almost 1/3 the level of 50% से भी ज्यादा गिर चुका है. And there is no recovery in the volume. There is no recovery in the number of ships. खराब नहीं हो रहा है. It is not getting worse, but there is no recovery. But still the containerized rate from Shanghai, China is going down. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ basically the Chinese weakness जो दिख रहा था, that weakness is not over. हम लोग PMI report देख सकते हैं, which is a very important sentiment report. Let's go to topics, market. They have changed the chart structure a bit. टॉपिक्स, सीडीएफ स्क्रीनर, सेंट्रल बैंक, विजुअल. सो टॉपिक्स के अंदर विजुअल में मैं आई एम इन. सो उसमें लेट्स गो टू पीएमआई हिट मैप, विच इज चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग हब. सो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को मैं नजर कर रहा हूं, एंड चाइना, ताइवान and this area, Hong Kong, these areas are not really recovering. Any score above 50 means growth. Hong Kong is at 49.7, Taiwan is at 48.1, China is at 49.1. I cannot fully trust the Chinese data, but still it is definitely indicative that weakness is pending. मतलब अभी भी चल रहा है वीकनेस. और इस सप्ताह हम लोग के पास एक न्यूज पहुंचा था रिगार्डिंग कॉपर. द चाइनीज इंपॉर्टेंट कॉपर स्मेल्टर्स लाइक चाइना कॉपर, जियांगजी कॉपर, they are coming together, they came together and took a voluntary decision on production cut. Production cut मतलब जो कॉपर है उसका जो ओर है, मतलब मेन रॉ मटेरियल, दैट इज द चिली इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, whereas China producers are the biggest refined copper producer. So refined copper production का जैसे ही बात हुआ production का, copper saw a price increase. Now एक बात ये ध्यान रखने की बात है कि if the situation is good, China is improving, then what is the reason for this production cut? During अच्छे टाइम में आप प्रोडक्शन कट नहीं, ग्रोथ की बात करते हो. सो डेफिनेटली ये जो चाइनीज वीकनेस ये लिंगर कर रहा है, ये एक लिंगरिंग सिचुएशन है जो which can be the trigger for the recession, or this interest rate shock can be the trigger, or the जो अभी हम लोग देखें कि ongoing geopolitical tension, this can also be the trigger. तो इन तीनों के ऊपर I'm closely keeping an eye.
अब हम लोग चले जाएंगे कमोडिटीज में। कमोडिटीज के साथ हम लोग जो देखेंगे व्हाट इट हैज डन फॉर द पास्ट say 3 months. If we see, the one of the best performer has been cocoa, so chocolate price बढ़ने वाले हैं। और उसके साथ रबर टायर कंपनीज के लिए बैड न्यूज। बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज गैसोलीन। क्रूड ऑयल सफर कर रहा है। क्रूड ऑयल प्राइस हैज नॉट गॉन सिग्निफिकेंटली अप। Where is crude oil? This is crude oil. Crude oil price is up 13%. Gasoline price is 27% up. That means if Reliance has done a good hedging, उनका profit margin बढ़ते जा रहा है, and Reliance कुछ can give you some good quarters coming ahead if gasoline price goes up more faster than the crude oil price. So crude oil price, all the commodities जो दिख रहा है, they are in a good shape. ओवरऑल जिस कमोडिटीज में वीकनेस दिख रहा है, आयरन ओर, दिस विल बी माय चाइना इंडिकेटर। आई विल लाइक टू सी अ ग्रोथ इन आयरन ओर। दैट कुड बी वन इंडिकेटर चाइना इज कमिंग बैक। Natural gas is down. That means the supply glut is continuing. And Russia, despite the sanctions, that means they are still present in the market. So there is no supply crunch. लास्ट 1 वीक में देखा जाए तो स्टिल द टॉप परफॉर्मर इज कोकोआ एंड रबर। So that means the chocolate producers are really going to feel the heat. This is more related to Ivory Coast, और very limited supply होता है कोकोआ का। Ivory Coast is the top supplier। वहां पे जब भी regional trouble रहता है, that is always an issue. Any kind of flooding, any issues related to Ivory Coast becomes a problem for cocoa. सो अदर जहां पे दिख रहा है कॉपर जो 1 वीक बढ़ा है, वी डिस्कस द रीजन। एंड इस हफ्ते दिखा थोड़ा गोल्ड में करेक्शन, बट द वन दैट आउट परफॉर्म इज सिल्वर। सिल्वर इज वन ऑफ द हार्ड एसेट विच कैन स्टिल गो अप, बिकॉज ये जो रोटेशन की बात कर रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर ग्लोबल रोटेशन में। मुझे दिख रहा है रोटेशन फ्रॉम रिस्की एसेट्स लाइक इक्विटी to hard assets like gold, silver, some commodities, and also a rotation from safe assets, just a long-term bonds, to back to the hard assets like gold, silver. So this is the ongoing एक rotational theme चल रहा है। साथ में इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट लेट्स लुक एट द इक्विटीज। हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, soon to start looking at. I think we have covered broadly, slightly macro जो हम लोग cover करना चाहते थे, वो cover कर लिए. So this is the main event, the Federal Reserve interest rate decision. This event is exclusively for CCMT students. This is not, you cannot just make a payment or join in. You have to be a student of CCMT to be present in this one. So next is जो important data होगा after FOMC. Is the Bank of England का interest rate decision. This will be a major mover for pound. हो सके जो move हम लोग देखे after Fed FOMC, वो move और fuel मिल जाए उसे after Bank of England. And the finally we are going to end the week on Friday, but looks like Friday we do not have our usual non-farm payroll. Non-farm payroll, sorry, this is actually not the non-farm payroll week. It's my mistake. So it's from March 22. So non-farm payroll is always the first of the month, first Friday of the month. So ये रहे broadly picture जो दिख रहे हैं. Influencing data most is Bank of England for GBP. Global market के लिए main event is Federal Reserve, and उसके पहले we have Bank of Japan and Bank of Australia. रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए अब आ जाते हैं एनालिसिस पे, कैसे हम लोग को इन्वेस्टेड रहना चाहिए and what are the trades we should be looking at. We'll analyze this through the daily chart and the fountain of gold setup of mine. So इसमें जो we have seen a start, a recovery in the 30-year long-term rate. So currently if do not go into TLT, long-term bond funds,
में बिल्कुल ही मत जाइए. दिस इज गोइंग अप. ओवरऑल बॉन्ड फंड का प्राइस गिरते जा रहा है. वी आर गोइंग टू मेक अ लॉस, सो वी डोंट वांट टू रिमेन इन दैट. हम लोग ट्रायल लिए थे, बट यहां से सपोर्ट लेके इट केम बैक, सो वी हैव ऑलरेडी स्क्वायर्ड ऑफ. इफ यू आर लिसनिंग टू माय वीडियो, बट एट लीस्ट स्टिल नाउ वी कैन स्क्वायर ऑफ. हम लोग को इसमें एक टर्न अराउंड चाहिए टू गो फॉर द टीएलटी. सो करंटली बॉन्ड फंड में कुछ खास नहीं. शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में हम लोग जरूर जा सकते हैं, और बिकॉज दे विल प्रोवाइड द, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में जा सकते हैं टू ईट द इंटरेस्ट रेट. आपको कोई भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में जानना है, यू कैन सिंपली गो टू ईटीएफ स्क्रीनर एंड देयर टीएलटी यहां पे दिख रहा है. टीएलटी इज द लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड, जिसमें आप लॉन्ग टर्म इंडिया से कुछ कुछ फंड्स है जहां पे करना इज कंप्लीटली लीगल. सो व्हेन इंटरेस्ट रेट विल बी गोइंग डाउन, विल बी गोइंग इनटू दिस लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड. सो करंटली इट्स नॉट, वी आर नॉट देयर. इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में थियोरिटिकली दैट व्हेन वी आर इन अ वीकली चार्ट इन अ बियरिश मोड, this is the time bond price goes up. So bond price goes up, but India may, due to illiquid nature of the market, it is not possible to eat these gains. Rather, जो म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट करते हैं इन द लॉन्गर टेन्योर ऑफ द मार्केट, दे टेंड टू प्रोवाइड interest rate income kind of a thing, a little bit of 10.5 sort of interest, because they go for state government bonds, and it's not very liquid market where you can easily square off part by part. It is not for retail market. It is a bank, a very specific fund oriented market into this one. So Indian funds are, theoretically it is a time to buy the long-term bonds, but to for the gain. But overall, जब से ये rally मतलब interest rate down हो रहा है, but broadly there are not much opportunity to eat this in a practical sense. But US ऐसा नहीं है कि there's a very liquid funds are available, so we can go easily go for long-term bond exposure. इसके साथ साथ हम लोग ग्लोबल इंडिसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इन्वेस्ट करना है इन इटली, सपोज इटली, सो व्हाट इज द फंड एंड द टिकर, सो इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. एंड वी कैन सिंपली गो टू आवर एनी काइंड ऑफ ब्रोकर. जो लोग बाहर है, अब मेरा कोई ब्रोकर के साथ प्रेफरेंस नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, जस्ट शोइंग इट फॉर एग्जाम्पल. Where you can search whether that ETF exchange traded fund is available or not, and you can see this exchange traded fund has given quite an awesome return, just in line with the जो इटली का इंडेक्स है जिसमें हम लोग एक्सपोजर की बात किए थे. This is the Italy index, and it has given an awesome run. So we can take exposure into foreign indices as well. Benefit क्या है? Obviously देखिए, indices will never return as much as stocks, and वही हमें चाहिए. Actually, at times like this, when there is selling pressure, when there are high volatility, we can move into index where indices enjoy a much lower volatility compared to individual stocks. और उसमें अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं जहां पे इंडिया में हम लोग स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, लिमिटेड इंडेक्स में, बट उसमें भी हम लोग सेक्टर्स में रोटेशन करके वी कैन बेस्ट यूटिलाइज आवर कैपिटल. सो ओवरऑल हम लोग जहां से चालू करेंगे, दैट इज द यूएस इंडिसेस में हम लोग पोजीशन रिडक्शन के बाद ऑलरेडी किए थे, बट यहाँ पे जो S&P 500 और फर्दर रिडक्शन नहीं करेंगे अनलेस वी सी अ येलो बैकग्राउंड. S&P, we have, I don't think the bearish trend has started yet, but this is a notable correction. फेड क्या करता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा. डाउ वी टॉक्ड अबाउट री एंट्री पॉसिबिलिटी, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग. डाउ वी विल एग्जिट एंड स्टे अवे. नैस्डैक हम लोग एग्जिट कर चुके हैं एज पर रिकमेंडेशन, एंड वी हैव नॉट एंटर्ड लेटेस्ट राउंड में. नैस्डैक विल स्टे अवे. Russell 2000 we tried with the weekly chart, thought a breakout is coming, did not work out the breakout. So both side volatility can happen. We will stay away from Russell as well. So थोड़ा exposure हम लोग रखेंगे US indices में still, and that is more towards S&P 500. S&P 500 is one of the most stable among the US indices. It's a tough one to break for the bears. So that's what I mean.
नेक्स्ट हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देखे थे इन न्यूजीलैंड विच डिड नॉट मटेरियलाइज। अपॉर्चुनिटी दिखा था ऑस्ट्रेलिया, एक बहुत ही अर्ली, डिड नॉट मटेरियलाइज, बहुत पहले से ही, तो इसमें हम लोग निकल गए। जापान हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं, ये जो लास्ट सेलिंग हुआ उससे हम लोग बच चुके हैं, वी गॉट सेव्ड। हम लोग ऑलरेडी येलो बैकग्राउंड के साथ एंड विद अ फुल रेड कैंडल वी हैव एग्जिटेड। China, we have tried, entered. China, we exited, and then again China, we re-entered. Because China यहाँ पे कौन सा शेयर में हम लोग एक्सपोजर रख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। MCHI is a much broader index, whereas China का A50 more mainland based indices has gone up. It has not been a broad recovery. सो MCHI बाई करके फायदा नहीं हुआ, rather China A50 had gone up. So China has been a volatile story. इसमें we can keep exposure looking at the long term charts, as this could be a very good comeback story in future. तो हम लोग early start कर रहे हैं, but we will not do anything big. It is still a comeback story. It's not confirmed comeback story. Singapore is very much related to China. Singapore has crossed the level. मेरा अलर्ट हिट हुआ था सिंगापुर में, but it did not hold up. There are several spikes, तो ये स्पाइक के ऊपर अलर्ट लगाएंगे। एंड सिंगापुर में जाने के लिए सिंगापुर में बुलिश होने के लिए वी नीड टू बी बुलिश मोर ऑन चाइना। सो चाइना में एक मोर रिकवरी के बाद ही इसमें कंफर्म जा पाएंगे। Rather हम लोग जहां पे है दैट इज यूरोप। यूरोप हैज बीन फायरिंग अप, इटली स्टिल अप, विल कंटिन्यू टू मेंटेन एक्सपोजर। इटली में अगर देखा जाए, इफ यू लुक एट इटली चार्ट, अब बहुत सालों का जो ये रेंज था, इट हैज बीन ब्रोकन। लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। इट हैज बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ अ रेंज जो इस बार भी ब्रेक नहीं हो पाया। नाउ इट हैज ब्रोकन अप। सो इटली इज स्टिल ऑन फायर। 93% विन प्रोबेबिलिटी हम लोग एक्सपोजर रखेंगे इटली में थ्रू एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आईबेक्स 35 हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लिए विद अ कमबैक स्टोरी। हम सिंपली यूएस यहाँ पे जाके यू कैन जस्ट टाइप SPAIN, आईबेक्स इज स्पेनिश इंडेक्स। सो EWP इज द इंडेक्स। नेक्स्ट आप हम लोग जाएंगे IND मनी। सो हियर इफ आई टाइप EWP, सो स्पेनिश शेयर, इसमें भी हम लोग एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। दिस इज ऑलरेडी रनिंग वन, बट आईबेक्स इज अ मोर ब्लू चिप। MCHI इज अ मोर कैप्ड, more broader index, so it is similar not the same. So केयरफुल होके थोड़ा इसके बारे में पढ़ के देन एक्सपोजर लीजिएगा। बट ओवरऑल जो दिख रहा है, स्पेन हैज गिवन अ गुड कमबैक, स्पेन में एक्सपोजर रखना चाहिए। फ्रांस में वी हैव पार्शियली स्टार्ट रिड्यूसिंग, फ्रांस इज स्टिल गोइंग अप, but this is, I'll prefer to gradually reduce in France. The reason simply is Spain is a more new comeback story. France as well as already run some course, so यहाँ पे कुछ fruits ripe है। Profit booking into strength and reallocating into better risk reward. France has been, since ये जो last buy signal and the breakout, it has given some awesome return. So still CAC 40 जो है we will remain, but overall in a most reduction mode. Similar with Euro stocks, momentum fading from the European blue chips, so we will reduce Euro stocks. Germany is up दिख रहा है, Germany is still going up and will continue to go up, but the momentum flattish, मतलब हम लोग इसमें position reduction पसंद करेंगे। This is called profit booking into strength. जब ये still going up, तब हम लोग अपना पैसा ग्रेजुअली हटा रहे हैं टू बेटर अपॉर्चुनिटीज। और मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में ही एक चेंजेस दिख रहा है, सो इट विल नॉट बी बैड आइडिया टू सिट अ बिट ऑन कैश। शॉर्ट टर्म मोमेंटम बियरिश इन यूरोप 600, सो इसमें भी एक्सपोजर रिडक्शन। लेट्स सी हाउ वंस फिर हम लोग बढ़ाएंगे। लेट शॉर्ट टर्म मोमेंटम टर्न बुलिश।
ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का टोटल ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उसमें भी वीकनेस दिख रहा है. सो ग्लोबल स्टॉक मार्केट वीकनेस इज टोटल एमएससीआई ग्लोबल स्टॉक मार्केट ईटीएफ. इसमें एक ब्रॉड एक्सपोजर दिखता है तो इसमें भी वीकनेस. सो दैट मीन्स इक्विटी एज एन एसेट क्लास अगर हम लोग करें एसपीजीएम divided by GLD, which is SPDR Gold Trust. So यहाँ पे clearly दिखा है कि we have moved to an asset reallocation where it's not just equities, like hard asset में reallocation दिख रहा है. So unless we are confirming कि equity में reallocate हो रहा है fund, it is better to have a lower exposure now towards equity assets. अगर कोई particular commodity ऊपर जा रहा है, you can increase your exposure to special type of commodities, say lithium. लिथियम यहाँ पे अगर या स्प्रॉट लिथियम माइनर्स, अगर लिथियम अगर आप लिथियम में बुलिश हो, सो लिथियम के जो स्टॉक्स है तो वो स्टॉक्स में यू कैन थिंक ऑफ इंक्रीजिंग एक्सपोजर. सो आई डोंट थिंक दे हैव गॉन अप. लिथियम काफी सालों से बढ़ के, इट्स जस्ट एग्जांपल के तरीके से दिखा रहा हूं. फॉर एग्जांपल गोल्ड ऊपर जा रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज गोल्ड माइनर्स ईटीएफ, जिसका सिंबल एनीवे मुझे पता है, दैट इज जीएलएक्स, या फिर हो आ जाना चाहिए था गोल्ड माइनर्स, गोल्ड माइनर्स इंडेक्स. ये आप ईटीएफ लिस्ट में जाके, ईटीएफ लिस्ट गूगल में टाइप करके यू कैन लुक फॉर द ईटीएफ. एक्सचेंज ट्रेड अपने इंडिया में भी है. ओवरऑल आप ईटीएफ डेटाबेस में जाके भी ढूंढ सकते हैं कि कौन सा आपको कुछ एसेट क्लास के हिसाब से चाहिए. एंड ओनली इनवर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आर नॉट लीगल है इंडिया में, वो इलीगल है. तो इनवर्स ईटीएफ में मत जाइएगा इफ यू आर फ्रॉम इंडिया. इफ यू आर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया देन आपके पास यू हैव मच बेटर एंड बिगर अपॉर्चुनिटीज जाने के लिए. सो दिस वाज ओवरऑल इक्विटी का पिक्चर. Nifty or Nifty का already have posted analysis on Saturday, so I'll not repeat that. Kindly have a look at the Saturday video of Nifty detail. उसमें हम लोग sector rotation की भी देखे थे. So with this we have covered bonds. कैसे रहना चाहिए bonds में? We have short term bonds में रह सकते हैं, not long term is not looking good. What about now currency? Currency में हम लोग क्या करेंगे और commodity में क्या करेंगे? So let's go to market. Market में let's go to forex. Forex का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए, so अगर 1 month this pound euro have done well, but last हफ्ते में what we have seen more of a comeback story दिख रहा है in the dollar, और US dollar is the top performer here. The bear steepening, the interest rate going up is fueling the dollar rise. Struggle कर रहा है न्यूजीलैंड, रशियन रूबल, थाई बाट, जापानीज येन, पाउंड, majority of has suffered. Hong Kong dollar, obviously it's a pegged with US dollar. Indian rupee has relatively done well. Our Reserve Bank of India is constantly intervenes on the volatility. So volatility remains checked. तो उसमें यूएसडी आईएनआर ज्यादा मूव नहीं कर पाता, एंड दैट्स व्हाई यूएसडी आईएनआर मेरा फेवरेट काउंटर भी नहीं है. डॉलर इंडेक्स में व्हाट आई एम सीइंग आर स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टोरी इन स्पेशली इन द मोमेंटम फैक्टर. बट यहाँ पे हम लोग बात भी किए थे कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, डॉलर कैन कम बैक एंड दिस इज हैपनिंग. आई हैव सम वाटर. सो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं बीच ऐसे मिक्स मार्केट में कुछ नहीं करता हूं. आई हैव स्क्वायर्ड ऑफ जो मेरा प्रॉफिट था, यूरो यूएसडी, यूरो आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, जो पार्शियल लॉस थे, दोज यूरो येन, पाउंड येन, ऑल आर स्क्वायर्ड ऑफ. सो इट्स अ मिक्स मार्केट. आई प्लेस्ड माय अलर्ट्स यहाँ पे जाके, प्राइस एक्शन बियरिश and price action bullish alert, which is the minimum requirement. जब वो आएंगे then I'll think looking at the other factors, और obviously मेरे वीडियो के through you will be able to know them. So euro USD the bullish जो हो रहा था that is game over हो गया. euro USD given a yellow background, हम लोग already exit की बात की in the previous.
So Euro USD, I'll remain out. I will wait for again further clarity. Majority of जो pair दिख रहे हैं वो उसमें I am waiting for further clarity. जब तक clarity नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए direction, I'm not there. USD JPY इंटरेस्ट रेट बहुत ही सेंसिटिव है. बैंक ऑफ जापान आ रहा है, साथ में आ रहा है फेडरल रिजर्व. Big movement expected from USD JPY, so I'll stay out right now. It's a mixed market. Mixed market, I don't do anything. I want clear clarity on trend. So next is GBP INR. Once again, similar story. GBP INR, we will have to get out. We have already moved out of GBP INR. Rainbow has given awesome exits. Euro INR, we have moved out completely. ये जो एंट्री किया था यूरो आईएनआर रैदर वन विच मूव्ड इनटू लॉस, यूरो आईएनआर लॉस में एग्जिट करना पड़ा. ये री एंट्री था यूरो आईएनआर में, डिड नॉट वर्क आउट. ऑब्वियसली थैंकफुली क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखता, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. जब तक वो लेवल मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं हुआ, आई डिड नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी. दिस वाज अ वार्निंग. इसमें मुझे बहुत मन हो रहा था बेचने का, बैकग्राउंड रेड हुआ था, बट आई फॉलोड मेरा मिनिमम रूल दैट द प्राइस एक्शन नीड्स टू बी बियरिश. दिस कुड बी अ रेंजिश मार्केट. सामने बैंक ऑफ जापान आ रहा है, so I cut down on my greed. One I got disappointed is the USD INR. USD INR ka move I did not like. I was really very much of disappointment. I have now fully squared off this one. Only a small long-term put is remaining. That is 83 put from that May month. Because it's still not as per the weekly. I have not got the exit. 83 के ऊपर cross कर जाएगा 83.05 the spot rate. I'll probably close that trade remaining also. But I was expecting this to 82.5. Obviously, it looks like it's not gonna happen right now. Maybe with Fed it can happen, but I can't take that risk heading into Federal Reserve, whether the candle size has come down. Plus daily chart, we got a full green candle. So in this, risk management is top priority. So I have reduced quantity, and if 83.05 crosses up, May month का जो मैं put gobble करके रखा हूं वो भी मैं square off कर लूंगा. इसके अलावा जो ट्रेड्स दिख रहे हैं दैट इज पाउंड येन, तो इसमें मेजर मूव डिसाइड होगा आफ्टर बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद. वी माइट सी अ स्ट्रॉन्ग मूव. नो क्लैरिटी, प्लेस्ड अलर्ट्स एंड मूव्ड अवे. यहाँ पे यूरो येन नो क्लैरिटी, मूव्ड अहेड. सिमिलर गोल्ड में एग्जिट मिला. इसमें इसके बारे में आई ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस वीडियो. गोल्ड में ब्यूटीफुल एग्जिट मिला है, पार्शियल री एंट्री का अलर्ट लगाया हूं विद प्राइस एक्शन बुलिश. मे बी फेड के साथ आएगा. आई विल कंसीडर ऑन दैट डे वेदर टू एंटर और नॉट. सिल्वर आई हैव नाउ स्टार्टेड एग्रेसिवली अ बिट इंक्रीजिंग पोजीशन. लग सकता है कि बिट लेट है, बट या इट इज अ बिट लेट. मैं यहाँ पे एंट्री तो किया हूं, जो एक बार फेल हुआ है, सेकेंड टाइम री एंट्री. बट या एंट्री करने के लिए, बट दिस मूव, दिस एडिशन इज नाउ नॉट ऑन बेस्ड ऑन टेक्निकल. ऑन बेस्ड ऑन टेक्निकल देयर आर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. बट आई थिंक द रोटेशन जो हो रहा है ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है. आई थिंक देयर इज अ रोटेशन टुवर्ड्स, रियली टुवर्ड्स द हार्ड एसेट्स. और अगर हार्ड एसेट्स में रोटेशन हो रहा है, देन सिल्वर इज रियली नॉट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी टू गो अप. मंथली चार्ट में एक बाई सिग्नल बहुत देर तक एक छोटा रेंज में खड़ा है. इफ दिस रेंज ब्रेक्स, जो हो गया एक्चुअली 24.5, उसके ऊपर सस्टेन किया है, एंड इफ इट गिव्स अ मंथली क्लोज, दैट मींस अ मंथली ब्रेकआउट अबव ये जो लेवल्स है. सो ये जो लेवल्स है इसके ऊपर ब्रेकआउट, एंड इसका मतलब नेक्स्ट मेजर लेवल इज 27. दिस कैन बी टेस्टेड एंड सिल्वर कैन इवन मूव टू $33. So this can be and really a starting opportunity. वीकली चार्ट में भी ये बाई सिग्नल, तो अभी भी बहुत कुछ बड़ा नहीं. स्टिल we can go a lot, so I can take risk. So I will take started considering. इसमें थोड़ा लेट ही है because I was focusing on technical and gold. जैसे gold correction दिया and silver went up that day, because that means more of a value rotation, because silver is much cheaper now compared to gold. It carries lot of, इसका historical break अभी भी बहुत बहुत दूर है.
So and in India it can significantly further go up. Silver also, silver यहाँ पे India में भी ऊपर जा सकते. It's a range. If this range, this is the range. Let me show you. 76,000 के ऊपर a closing, a strong movement. This will lead to a very bigger run into silver. So silver I'm now more looking closely. इसके साथ साथ और एक commodities है जिसका नाम है, आप सब लोग जानते हैं, कॉपर. कॉपर का 738 का ब्रेकआउट, इसको इसीलिए पेशेंस इज इंपॉर्टेंट. और कॉपर भी क्लोज कर रहा है इंपॉर्टेंट लेवल 743 के ऊपर, जो उसको ईए लेवल टेस्ट करने को पुश कर रहा है 780. एंड इफ दिस वन ब्रेक्स देन वी आर इन फॉर अ बिगर राइड. So let's see how it goes. Copper will remain bullish. Copper is still long. ये चाइना का जब से न्यूज आया है, then it is further going up. डेली में ब्रेकआउट हुआ है. Let's go with the copper and see. Will follow the rainbow setup का रूल जो है कॉपर में. Usually कॉपर आई विल ऑब्वियसली 125 मिनट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. बट दिस इज जो न्यूज बेस्ड है, न्यूज बेस्ड मूवमेंट है, तो मैं डेली चार्ट को थोड़ा इंपॉर्टेंस दूंगा. डेली चार्ट में मुझे रेड कैप चाहिए इसमें पार्शियल एग्जिट के लिए. जिंक हैज बीन अ डिसअपॉइंटमेंट. ये और एक रीजन है कि जिंक इज इंपॉर्टेंट फॉर गैल्वनाइजेशन स्टील के लिए. और जिंक का स्ट्रॉन्ग ना होना, जितना जिंक स्ट्रॉन्ग हुआ एंड वी पार्शियली एंजॉयड द रैली, but this level needs to break where zinc is actually giving the correction. So after this strong break, then only I'll be confident enough to relong zinc. So currently I'll stay away from zinky. सो लेट्स गो टू इसके साथ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल इसमें मैं लॉन्ग पोजीशन लगाया हूं 6,600 के ऊपर. मैं डिस्कस भी किया था कि आई विल गो लॉन्ग. दिस लेवल वाज क्लियर्ड विद अ बिट कन्विक्शन. नेक्स्ट टारगेट लेवल इज द नेक्स्ट फ्लैट लाइन $83. फर्दर ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी फॉर क्रूड ऑयल, एंड दिस इज कैन इंक्रीज द बियर स्टीपनिंग ऑफ द yield curve, and that will be further bad news for the equities. Crude oil going up, fueling bear steepening will be a bad news for equities. So I'll be very careful on that front. US oil going up. And natural gas, I will stay away. Natural gas bearish, काफी bearish है, but this is more of a rangish. यहाँ पे ये लेवल अभी भी टूटा नहीं है. सो नेचुरल गैस का जो बियरिश दिख रहा है, इट मे नॉट गो फॉर अ फुल फ्लेजेड, क्योंकि अभी भी ट्रेंड के हिसाब से वी हैव मूव टू बाय सपोर्ट सेल रेजिस्टेंस, एंड मार्केट हैज मूव टू, इंस्टेड ऑफ सेलिंग, नाउ इट इज अ बियरिश रेंज मार्केट. सो ये रहा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन. आई होप ये एंजॉय किया आप लोग मेरे साथ ये डिस्कशन. आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेट करने में हेल्प होगा. So, and if it helps, don't forget to like and subscribe my video. All the best from my side. And once again, happy trading.